अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम जियोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है द इनसाइड ऑफ अर्थ, यानी कि हमें अर्थ का इंटीरियर आज पढ़ना है। हमने जियोग्राफ़ी का पहला चैप्टर इन्वायरमेंट कंप्लीट किया है। इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। तो आज हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। There are three layers of the earth. The first one is the crust. It is the first layer of the earth. The second layer is the mantle, and the third is the core. यहाँ पर अगर हम देखें, suppose this is earth. It has three layers. This is the outermost layer. This outermost layer is called the crust. Okay. After crust comes the mantle, that is क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है, क्रस्ट के अंदर जो लेयर आती है, इसको हम मेंटल कहते हैं। तो लास्ट में द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सो in short we can say that the earth consists of three layers: the crust, the mantle and the core. तो हम the first layer is the crust. The uppermost layer of the earth is called the crust. The crust is very thin with an average thickness of 35 kilometers. ये आपने देख लिया, अर्थ की outermost layer is the crust. It is the thinnest of all layers, यानी कि तीनों layers में से सबसे पतली लेयर यही है, crust. Its average thickness is 35 kilometers. If the earth was an egg, then the crust could be regarded as the shell. आपके समझने के लिए अगर हम सपोज करें अर्थ एक अंडे की मानद है, तो क्रस्ट किस पार्ट को हम कहेंगे? अंडे का जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी कि जिसको हम शेल कहते हैं। इसी तरह अर्थ का जो अपर मोस्ट यानी कि आउटर मोस्ट कवर है, दैट इज़ द क्रस्ट. द क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल प्लेसेस. ये बात इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है. क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल प्लेसेस. जो ये क्रस्ट है, ये हर जगह इसकी थिकनेस बराबर नहीं है. इट इज़ थिनर अंडर द ओशंस एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. यानी कि लैंड मासेस जो हैं, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, वहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा है बनस्बत उसके, यानी कि ओशनिक क्रस्ट से इसकी थिकनेस ज़्यादा है. वहाँ पर थिनर वी कैन से इट इज़ थिनर अंडर द ओशंस एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. यहाँ पर जो हमने पहले ही कहा, एवरेज थिकनेस हमने ली है 35 किलोमीटर्स. ये हमें याद रखना है कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस. इट इज़ थिनर अंडर द ओशंस एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. राइट. अब हम देखेंगे क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है. द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कॉल्ड साइल. The upper part of the continental crust is called Sial. Sial. It is rich in silica and aluminium. अपर मोस्ट जो अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसका कंपोजिशन है सिलिका एंड एल्युमिनियम. इसी वजह से हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे SI स्टैंड्स फॉर सिलिका, AL स्टैंड्स फॉर एल्युमिनियम. यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, वो
किसका कंपोज्ड होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का। सिलिका एंड एल्युमिनियम। The lower part of the continental crust and the whole of the oceanic crust is made of silica and magnesium. इस वजह से हम सिमा शॉर्ट में लिखते हैं. It is made up of sima. That means Si stands for silica and Ma stands for magnesium. हमने पहले याद रखा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम. अब हमें दूसरी बात याद रखनी है, जो ओशिनिक क्रस्ट होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. द सरफेस इज़ क्वाइट अनइवन. जो क्रस्ट होता है इट इज़ अनइवन. दैट मीन्स it has different landforms. At places there are elevated landforms which we call mountains. There are depressions at other places. For example, Mount Everest is a mountain. It is the highest peak on crust. Its height is 8,848 meters. Mount Everest is 8,848 meters above sea level, and Mariana Trench in the Pacific Ocean is 11,034 meters below sea level. आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा. जो क्रस्ट की सरफेस है इट इज़ अनइवन. कहीं पर it has highest peaks, it has peaks, and at places there are depressions. Mount Everest is the highest peak on crust. In the same way, Mariana Trench is the deepest place on crust. Its depth is 11,034 meters below sea level. Next layer after crust, that is the layer uh, underneath crust, is the mantle, or we can say below the crust lies the mantle. It extends up to a depth of about 2,900 kilometers. जो ये मैंटल है दूसरी लेयर जो है अर्थ की, इसकी डेप्थ कितनी है? 2,900 किलोमीटर्स. पहले हमने याद रखा क्रस्ट की एवरेज विड्थ हम कहेंगे या हम डेप्थ कहेंगे. क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 35 किलोमीटर्स एवरेज. और हमने कहा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट में डिफरेंस है. दैट इज़ दे आर नॉट दे आर नॉट थिक. they are not the they are not of the same thickness. This next layer, that is the mantle, its thickness, or we can say its depth extends up to about 2,900 kilometers. Its chief constituents are silicates of iron and magnesium. जिस तरह हमने पढ़ा क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कंपोजिशन होता है साइल, सिलिका और अल्मोनियम, इसी तरह ओशिनिक क्रस्ट का कंपोजिशन होता है सीमा, दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम. यहाँ पर हमें याद रखना है जो मेंटल है इसका कंपोजिशन मेनली होता है सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और वी कैन से FEMA. FE will stand for iron, MA will stand for magnesium. Okay. Next point is both the depth and the density of the mantle increases with increasing depth towards the center of the earth. यानी कि जितना हम मेंटल यानी कि दूसरी लेयर में डीप होते जाएं, यानी कि इसकी डेप्थ जितनी जितनी इंक्रीज़ होती जाएगी, इसके कंपोजिशन की जो इसका कंपोजिशन है उसकी डेंसिटी उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी. ओके. Now the third layer, that is the innermost layer of the earth, is the core. The innermost layer of the earth is called core. It is about 3,500 kilometers thick. जैसे हमने याद रखा क्रस्ट की एवरेज थिकनेस होती है 35 किलोमीटर्स. Mantle is 2,900 kilometers in thickness.
or we can say it extends up to a depth of 2900 kilometers. Now, next point we have to remember is that the core extends up to a depth of, or we can say the thickness of the core is 3500 kilometers. यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा. Suppose this is the outermost layer, that is crust, its thickness is 35 kilometers. Next comes the mantle. It extends up to a depth of 2900 kilometers. Now last is this core. Its thickness is about 3500 kilometers. It is the densest layer. जैसे आपने पढ़ा मेंटल में जितना जितना डीप हम होते जाएंगे उतनी इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी. इन द सेम वे द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर. It is made of heavy metals like iron and nickel and is called knife. Ni is for nickel and Fe for ferrum, that is the Latin name of iron. हमने याद रखा क्रस्ट का मेन कंपोजिशन क्या होता है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट composed of soil, that is silica and aluminum. Mantle, next is this oceanic crust. It is composed of sima, that is silica and magnesium. Next was this mantle. It is composed of iron, silicates of iron and magnesium. Now the third layer, that is the core. Its main composition is nickel and iron. We can remember knife, nickel and iron is the composition of this core. It is made up of heavy metals like iron and nickel and is called knife. The temperature at the core the temperatures at the core are high enough to melt all metals. यानी कि जो ये कोर है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जिस मटेरियल का ये कोर बना हुआ है वो मोल्टन फॉर्म में होता है. यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से द मटेरियल exists in molten form, or we can say liquid form. The study of seismic waves shows that the outer part of the core is molten while its innermost part is solid. Seismic waves की मदद से जो स्टडीज़ की जाती हैं अर्थ से मुतालिक, तो क्या पता चला है कि जो हमने कहा कि this the material of which the core is made exists in molten form, but here core is in solid form. This is because of high pressure which exists in the innermost part of core. Okay.